So today our topic is about drug addiction. अच्छा, इसकी definition क्या है? The consumption of psychoactive substances without medical or healthcare instruction or without the advice of healthcare professional. एक डॉक्टर की जो एडवाइस है उसके बगैर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेंटल अलर्टनेस या जो कि मेंटल को अफेक्ट करता है। इसकी जो सेकंड डिफिनीशन है वो परसिस्टेंस एक्सेसिव यूज ऑफ सब्सटेंस विदाउट रिगार्ड टू हेल्थ कंसर्न और एक्सेप्टेड मेडिकल यूज नॉन परमिसिव कंजम्पशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। जो चीज़ें अलाउड नहीं है या जो ड्रग्स अलाउड नहीं है उसको कंज्यूम करना। Administration of drug despite of the knowledge of the adverse effects of the drug. Drug abuse is continued intentionally as a source of escape from the unpleasant condition. जो भी उसको कोई भी मतलब परेशानी हो उससे निजात के लिए ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना ताकि उसका जो मूड है वो ठीक करे। अच्छा, इसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स है वो है सब्सटेंस यूज, इलिसिट यूज, कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग एडिक्शन, ड्रग मिसयूज मेनली unintentionally, a drug for wrong indication, change duration, frequency dose, ये सारे related terms हैं। अच्छा, अब फैक्टर एसोसिएटेड विद ड्रग एब्यूज कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग एब्यूज के साथ एसोसिएट है? साइको एक्टिव इफेक्ट, दिमाग पर इसका असर है। टू गेट रिड ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन। एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी और टेंशन से निजात के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। लैक ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड सोसाइटी, सोसाइटी में आपकी जब पहचान ना हो या आप मार्जिनलाइज हो जाते हो। फ्रस्ट्रेशन, फॉर प्लेजर, फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए, मज़े के लिए और फन के लिए। अच्छा, सोशल डिप्राइवेशन ट्रेड्स, फॉर फेयर ऑफ लूजिंग समथिंग एज अ मीन ऑफ एस्केप, किसी चीज़ से मतलब किसी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। इंक्रीज्ड ईज अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, या तो वो ड्रग्स बहुत आसानी से अवेलेबल है। Joining a bad company, group, society, drug abuse is generally considered to be associated with younger people. किसी भी bad company को या society में जब आप ज्वाइन करते हो या कोई भी एक बच्चा है वो दूसरे यंग पीपल के साथ गिल मिल जाता है जो कि वो ड्रग यूज़ करते हो। होमलेसनेस, अगर किसी का यतीम हो या उसका घर बार नहीं हो, होपलेसनेस, ना उम्मीदी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली एजुकेटेड पीपल, और जब एक तालीम याफ्ता को नौकरी नहीं मिलती तो फिर ऐसी चीज़ों में वो गिर जाता है। क्लासेस ऑफ कॉमन ड्रग एब्यूज। नारकोटिक्स, अच्छा ये क्लासेस है हीरोइन, ओपियम एंड morphine. Opium is obtained from the poppy plant. Scientific name is Papaver somniferum. Heroin is a brown powder, maybe white or off-white powder, which can be seen in these pictures. These are heroin addicts, which can be seen in streets and on roads and parks. Cannabinoid is a narcotic drug. It is obtained from the cannabis plant, also known as hemp plant. Its botanical name is Cannabis sativa. So cannabinoid is any chemical that activate the body cannabinoid receptor. Act on these receptor. Cannabis plant, marijuana, a dry shredded green and brown mix of flower, stem, seeds and leaves. These parts are mixed together and form the
these powder cannabinoids. The main active chemical in marijuana is delta 9 tetrahydrocannabinol (THC), a cannabinoid. This is the main um, chemical which acts on the brain and cause uh, an inhibition effect. It's this THC acts on the cannabinoid receptor, uh, which are CB1 and CB2 receptors. CB1 are primarily found in brain, and CB2 in immune system and hemopoietic cells. So cannabinoids may be in the form of marijuana, hash, bhang, hashish. These withdrawal symptoms occur with these narcotics drugs. If this drug is not used for some time, so the following symptoms and effects occur. These are irritability, चिड़चिड़ापन, इंसान गुस्से में आ जाता है बहुत जल्द, स्लीपलेसनेस, बेख्वाबी, डिक्रीज एपेटाइट, भूख का ना लगना, एंजाइटी, परेशानी, ड्रग क्राविंग और उस नारकोटिक ड्रग के लिए ख्वाहिश बार बार के वो मैं उसको इस्तेमाल करूं. Hallucinogens. It is an other class of narcotic agents. These are psychoactive agents that alter a person's perception of reality. मतलब रियलिटी को चेंज करता है. जो भी हम रियलिटी में देखते हैं उस तरह एडिक्ट को वो नजर नहीं आता. Hallucinogens are a diverse group of drugs that cause an alteration in perception, thought, mood, thought और perception को चेंज करता है. इसकी जो एग्जांपल है वो LSD है, MDA, STP, DMT, DT, mescaline, peyote और ये सारे हैं. इसके अलावा एक्टेसी, MDMA वगैरह. ये tablets of MDMA है, methylene methamphetamine. So it is a synthetic mind-altering drug that acts like a stimulant, and hallucinogen also known as ecstasy. तो स्टिमुलेंट है, साइकोएक्टिव ड्रग है. अगर इसके इस्तेमाल से जो ब्रेन है वो बेदार रहता है, एक्टिव रहता है, तो ये स्लीपलेसनेस भी काज करता है. इसके अलावा ये जो एक किस्म के माइंड को भी चेंज करता है और मुख्तलिफ किस्म के पिक्चर्स या परसेप्शन इंसान के सामने आती है जो कि हकीकत में वो उस तरह नहीं होता. These effects are related with hallucinogens. There are some withdrawal symptoms if the drug is not used for some time. These symptoms occur, which can be depression, anxiety, impaired memory मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी वो एनहेंस हो जाती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है. मेंटल कंफ्यूजन, परेशानी होती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. फिर अगर वो इस्तेमाल ना करें इंसान का दिमाग भी काम नहीं करता. सुसाइडल थॉट्स और खुदकुशी के जो थॉट्स है वो इंसान को बार बार आती है. एम्फेटामिन्स, another psychoactive drugs, another narcotic. Amphetamines and amphetamine related drugs, these are CNS stimulants. Amphetamine group substances include predominantly amphetamine and methamphetamine, present in coca leaves, and consist of cocaine, feeling of well-being, great alertness and energy, talkative and excited, and sense of power and superiority. So ये इससे जो दिमाग है वो एक्टिव हो जाती है, इंसान अच्छा महसूस करता है, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इंसान बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाता है, एक्साइटेड होता है, खुश होता है और उस एक सेंस ऑफ पावर और सुपीरियरिटी का शिकार हो जाता है. टोबैको एंड इनहेलेंट्स, तंबाकू और दूसरी चीज़ें जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए अंदर लेती. Tobacco, this is the plant of tobacco. Common name is tobacco, tambaku. Local name and botanical name is Nicotiana tabacum.
Okay, tobacco withdrawal symptoms with tobacco are irritability, attention difficulties, sleep disturbances, increased appetite, powerful craving for tobacco. Increased appetite की वजह से इंसान मोटापे का शिकार भी हो जाते हैं। जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो वो फिर मोटा होता है। Inhalants. Inhalants which can be inhaled through mouth or nose are volatile substances which can be converted into vapor easily that produce chemical vapor. They can be inhaled to induce psychoactive or mind altering effect. Mind को change करता है. Types of volatile solvents like paints, thinners and removers, dry cleaning fluids, degreasers, gasoline and glues. These inhale include aerosol sprays, paints, deodorants, and hairsprays. Gases include ether, chloroform, halotene, and nitrous oxide. Nitrites contain cyclohexyl nitrite, isoamyl nitrite, and isobutyl nitrite. So the boy is inhaling maybe a laughing gas or N2O. Now sedative and hypnotics are the type of narcotics which cause sedation, sleep. There are two types of sedative, barbiturate and tranquilizers. Amobarbital, pentobarbital, and secobarbital. These are types of or examples of barbiturates. Alprazolam, uh, chlordiazepoxide, clonazepam, clorazepam, and in the bracket these are their trade name in market which are available in market. Alcohol. Next narcotic drug is alcohol, जिसे उर्फ आम में हम शराब कहते हैं. Types of alcohol are beer and wine. Beer, one of the oldest and most widely consumed drink in the world, more than 10,000 BC. Third most popular drink after water and tea from cereal grains, cause heart diseases, stroke, diabetes mellitus and other long-term health effects. सही है। ये तीसरा बहुत मशहूर ड्रिंक है पानी और चाय के बाद। इसको हम जो ग्रेन्स है, गल्ला है, दाने हैं, गंदम है, उनसे ये हासिल कर सकते। और ये जो बीमारियाँ काज करती है उसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फालज, डायबिटीज मेलेटस, शुगर, ज़ियाबीतीस और बहुत से दूसरे बीमारियों का सबब बनती है। वाइन, अल्कोहल बीवरेज या स्ट्रीट ड्रग भी कहते हैं। फ्राम ग्रेप्स बाय फर्मेंटेशन, ग्रेप्स से हम खमीर के जरिए इसको हासिल कर सकते हैं। डेट बैक टू 6000 BC फ्राम जॉर्जिया, 5000 BC ईरान, 4000 BC सिसिली इटली का एक जजीरा है। और ईरान, जॉर्जिया में ये 5-6 हज़ार साल पहले से ये उस वक्त से ये पिया जाता है। टाइप्स, रेड वाइन एंड वाइट वाइन. Effects are flushing, lethargy, sedation, amnesia, respiratory depression, coma and death. सही है। फ्लशिंग, स्किन रेड हो जाती है, इंसान थक जाता है, स्लीप काज करता है, एमनीजिया इंसान का दिमाग वो काम नहीं करता सही तरीके से, रिस्पायरेशन कम हो जाती है और आखिर में जब डोज ज़्यादा होती है तो फिर कोमा और डेथ काज करता है। Anabolic steroids. It contains these drugs, and the most important is testosterone and ester. Consequences are drug abuse. इसके असरात क्या है या इसके जो आखिर में नतीजे है वो क्या बनती है हमारे पास। ड्रग abuse has been the most complex social problem faced by the country. The community involvement with the drug was not bound by age and involved all groups, either poor, rich, professional, laborers, public servants, or students.
Health consequences include injected drug users, HIV, AIDS, hepatitis C, and hepatitis B. Social and economical issues, सही है। इसके जो ड्रग अब्यूज़ के जो consequences है वो social भी है और community भी इसमें इन्वॉल्व है। हर एज के लोग इसको इस्तेमाल करता है तक, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, गरीब हो, अमीर हो या कोई भी एजुकेटेड या अनएजुकेटेड हो, सब इस्तेमाल करते। और कुछ जो ड्रग्स जो कि इंजेक्ट होती है, वो जो स्ट्रीट ड्रग्स जैसे कि हीरोइन है, तो वो HIV और एड्स, हेपेटाइटिस सी और जो यूज सिरिंजेस है, उसी के ज़रिए ये बीमारियां फैलती है। इसके अलावा इसके सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज भी है। History of imprisonment is very much common in drug addicts. History of criminal activities, क्योंकि पैसों के लिए वो फिर डाके और चोरियां करते हैं। Spending of money on expensive street drug, जिस तरह के आइस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए फिर वो अगर पैसों के लिए फिर वो डाके करते हैं। Control of drug abuse, how we can control drug use, drug abuse. So the management and control of drug abuse include primary and prevention and secondary prevention. In prime prevention, preventing people like school children and people who have just left education from starting to use drugs. Secondary drug, the target population is people who are already using abuse drugs, aim to discourage further. Primary prevention जो कि बच्चे जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो या अभी अभी वो ड्रग इस्तेमाल करते हो, तो उनको कंट्रोल करना। और सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है उसमें उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो कि chronic यूजर हो। Strategies, how can we can control drug use, drug abuse. ड्रग एजुकेशन, सबसे पहले हमने उनको तालीम देना है, और ये तालीम कौन दे सकते हैं? टीचर्स, यूथ वर्कर्स, promotion workers, medical and nurse staff in a hospital can educate people about the harmful consequences of drugs. कैंपेन्स, मुहिम चला सकते हैं, लीफलेट्स, किताबचे, बुकलेट्स, सोशल मीडिया वीडियोस के ज़रिए और पोस्टर के ज़रिए आगाही फराहम की जा सकती है। सोशल सपोर्ट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं in the form of advice and assistance, use of psychological tool by psychologists and counselors, motivational interviewing to move people to psychological state. रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर देयर, जो रिहाब सेंटर्स है जहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स को तालीम दी जाती है, उनकी ट्रीटमेंट दी जाती है। उसमें इंक्लूड है डिटॉक्सिफिकेशन, सोशल सपोर्ट, इंटेंसिव साइकोथेरेपी टू फैसिलिटेट सस्टेन चेंज, काउंसलिंग एंड अदर बिहेवियरल थेरापीज। So here detection and detoxification, rehabilitation in an institution, supervision in the community, and follow-up care. A rehabilitation is usually provided within a therapeutic community. Participants live in the environment where treatment is given, often several months. ये बहुत से महीनों के लिए वहाँ रिहाब में होते हैं। वहाँ पे ट्रेन स्टाफ होती है, डॉक्टर होती है, नर्सेज होती है, और उसकी निगरानी में उनकी केयर की जाती है। Now, treatment of for drug addicts. There is assessment, behavioral therapy, pharmacotherapy, substance use monitoring, clinical and case management, self-help, and continuing care. Pharmacotherapy, or for addictive disorders, pharmacotherapy mean to treat a patient with medicine and drugs. अच्छा, जो लोग ओपियाइड एडिक्शन है, ओपीएम या जो पेपावर सोमनिफरम की जो इंग्रेडिएंट्स है
उसको अगर कोई एडिक्ट हो तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट है? मिथाडोन इज अ फार्माकोथेरेपी. There is methadone maintenance clinics, reduction by a slow taper to minimize discomfort. मतलब स्लो उसकी जो डोज है वो डिक्रीज करते हैं. प्रिवेंट ओपियाइड विथड्रॉल, ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ illicit ओपियाइड यूज एंड डिक्रीज ओपियाइड क्राविंग. तो ये मेथाडोन थेरापी में ये सारी चीजें इंक्लूड है. बुप्रीनोरफिन. It is a semi-synthetic partial opioid agonist. Addition of naloxone to buprenorphine may further decrease abusability, liability. इन दोनों को combination में use करते हैं. Eliminate withdrawal symptoms. Its examples are its examples are Binorine, Bipnor, and Apinor. These are all their trade names. Naltrexone. It is a long-acting synthetic opioid antagonist. It prevents withdrawal symptoms. Individual must be medically detoxified and opioid-free for several days before taking naltrexone. E-Treg, Nellify, and Trexane, these are their trade names. For tobacco, there is there is treatment include uh, bupropion, Zyban. It suppresses tobacco craving, promotes cessation without concomitant weight gain. टोबैको से वेट गेन हो सकती है लेकिन इसकी जो अल्टरनेटिव है वो बुप्रोपियोन है, लेकिन इससे वेट गेन नहीं होती. Vencilline Chantix block the ability of nicotine to activate dopamine. निकोटीन के बगैर डोपामीन एक्टिवेट होता है. Interfering with the reinforcing effect of smoking, thereby reducing craving and supporting abstinence from smoking. सही है, जो लोग स्मोक करते हैं वो ये यूज करते हैं तो वो स्मोकिंग वाला मजा इनको देता है, लेकिन ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है. For alcohol addiction, the management include acamprosate. It stabilizes the chemical balance in the brain that was disrupted by alcoholism, possibly by blocking glutaminergic and methyl D-aspartate receptor, while GABA type A receptor are activated. It reduces insomnia, anxiety, restlessness, dysphoria. इसको कम करते हैं. Help dependent drinkers maintain abstinence for weeks to months and more effective in patients with severe dependence. Disulfiram, intolerance to alcohol, because if used with alcohol it can cause headache, nausea, vomiting, dizziness, sweating, and blood vision. Thank you.